welcome back to your first lesson of Korean beginner course. So, आज हम पढ़ेंगे Hangul. Han mean Korea and Gul mean letters. So, Hangul मतलब Korean letters. So, Korean alphabets को Korean में कहते हैं Hangul. So, today we're going to learn Korean alphabet. So, there are 10 basic vowels and 14 basic consonants. And इनके mixture से आगे जाकर कुछ डबल वॉवल्स एंड डबल कॉन्सोनेंट्स बने हैं. सो आज के वीडियो में हम बेसिक वॉवल्स पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सोनेंट्स. एंड हंगल इज क्रिएटेड बाय किंग सेजोंग इन 1446. एंड हंगल के क्रिएट होने से पहले कोरिया में लोग चाइनीज पढ़ते थे. ज्यादातर लोग वहाँ पे इलिटरेट होते थे, हाई प्रोफाइल लोग होते थे, वो चाइनीज पढ़ते थे. सो जस्ट लाइक आई सेड, आज हम पढ़ेंगे बेसिक वॉवल्स. So, ये हमारा फर्स्ट बेसिक वॉवल है. This is a. Okay. So, just like in English we have a, e, I, o, u in English. Similarly in Korean we have lot of vowels, not just a, e, I, o, u. जैसे इंग्लिश में होता है कि वॉवल एंड कॉन्सोनेंट कंबाइन होके साउंड प्रोड्यूस करते हैं. सिमिलरली कोरियन में भी एक वॉवल एंड एक कॉन्सोनेंट साथ में मिलकर साउंड प्रोड्यूस करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखनी है कि अगर आपको कोरियन में साउंड निकालनी है तो एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट का साथ में मिलना बहुत ज़रूरी है. अगर एक वॉवल नॉर्मली लिखा होगा तो आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते. देयर इज़ नो साउंड ऑफ इट. अगर आपको उसको प्रोनाउंस करना है तो एक कॉन्सोनेंट को उसके साथ आना बहुत ज़रूरी है, तभी कोरियन में साउंड प्रोड्यूस होगी. वी हैव दिस कॉन्सोनेंट एंड इसकी कोई साउंड नहीं होती है. देयर इज नो साउंड ऑफ इट, इट्स साइलेंट. सो अगर मैं इस कॉन्सोनेंट और इस वोवल को साथ में लिखूं तो हम कोरियन में आ बोल सकते हैं, मतलब कोई साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. अदरवाइज इन दोनों की अलग अलग कोई साउंड नहीं है. इन दोनों को साथ में आना पड़ेगा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए. Before starting our vowels, there are few things that I would like to mention. The stroke order. The stroke order is order of lines that we use to make letters. What is the pattern to write in Korean? Okay, this is called a stroke order. Which line you have to create first and then second. So the stroke order of writing a letter is left to the right and top to the bottom. You have to create first this line, left to the right and then top to the bottom. Top to the bottom. So ये सिर्फ एक तरीका है कि कोरियन लेटर्स को कैसे लिखना है. ऊपर से नीचे, इधर से उधर, पहले कौन सी लाइन बनानी है, फिर कौन सी लाइन बनानी है. जस्ट अ स्ट्रोक ऑर्डर. Now before starting, one more thing. जो किंग सेजोंग थे उन्होंने बोला था कि आप अपने माउथ का जिस तरह का गेस्चर बनाएंगे उस तरह की आपकी साउंड निकलेगी. So, while pronouncing every consonant and every vowel, you have to focus on your mouth gesture. Okay? Then you can accurately pronounce any vowel and any consonant. So, our first vowel is A. A. So, while pronouncing this vowel, you have to spread your mouth as much as you can. A. Ah. Second one, you have to say ya. So while pronouncing ah and ya, you have to spread your mouth. Ah, ya. Now, next. Oh. Okay, while pronouncing this one, you have to make oval gesture of your mouth. Oh. Then you can accurately pronounce this vowel. Because a lot of learners mispronounce this word, so you have to focus. You have to make oval gesture of your mouth. Oh. Okay. Now next, yaw. While pronouncing oh and yaw, you have to make oval gesture of your mouth. Oh, yaw. Okay. I hope you got it. Now, next. O. While pronouncing this vowel, you have to make round shape of your mouth. O.
O, O. If you add one more stroke from the top to bottom, it will become yo, yo. While pronouncing O and yo, you have to make round shape of your mouth. O, yo. Next, E, E, E. While pronouncing this vowel, you have to show little teeth and the linear shape of your mouth. E, E, E. Now next. Lot of learner confused in this vowel, so please listen it carefully. So this one is uh, uh, uh. While pronouncing this vowel, you have to make linear shape of your mouth, and you have to smile slightly and show your teeth. It be like uh, uh, uh. Okay, don't pronounce it as a you, you. No, this is wrong. You have to pronounce uh, uh. When you saw something, oh, ye kitna kharab hai, something like this. Understood? So I hope you understood all the vowels clearly. Please practice them. You cannot understand them in the one day. So you have to practice again and again. Rewatch this video, save this video, and practice as much as you can. Writing practice, speaking practice is must. Otherwise, in the future, you will mispronounce all the vowels. Okay? As much as you can practice, it will good for you. And I hope you like this video about the vowels, and in the next video we will going to learn our 14 basic consonants. So please make sure to subscribe me. Kram Tamewayo.